18 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਕੇ ਸਭ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको माइथोलॉजिकली अगर आप देखें ना तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था और ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब कृष्णा जी के बहुत बड़े भगत थे। तो वो हिरण्यकश्यप ये समझता था कि वही भगवान है, ही इज द लॉर्ड, देयर इज नो गॉड इन द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे सिवा किसी की पूजा ना हो, और प्रहलाद जी उनकी बहुत ही मतलब कृष्ण की पूजा करते थे। तो उनकी एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वो कभी नहीं जल सकती। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही खुद के बेटे को पहले तो पर्वत से फेंक दिया, बहुत बहुत बड़े ऊपर से, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने होलिका को बुलाया और बोले तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जा और हम आग लगाएंगे, तू तो जलेगी नहीं लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और इस दुनिया में भगवान को कोई पूजने वाला रहेगा नहीं, सब मुझे ही पूजेंगे क्योंकि मैं ही भगवान हूं। तो होलिका जी ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठा के होली आग का दहन किया एंड देन शी गॉट बर्न। प्रहलाद जी वैसे के वैसे थे। उस दिन से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और उसी टाइम पे भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का मतलब आधे नर आधे सिंह का रूप लेके, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उनको कोई मार नहीं सकता, ना आदमी मार सकता है ना जानवर। होली या तो वर्किंग वुमेन हो या तो हाउस वाइफ, लाइक सबके लिए होली का त्यौहार सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। स्पेशली हमारे इंडिया में एवरीबडी वांट्स टू जस्ट एंजॉय दिस फेस्टिवल। तो घर से तो अगर गृहिणी जो हाउस वाइफ होती है तो वो तो गुजिया बनाती है, जैसे आप देख सकते हो गुजिया है। देन हमारे में भांग भी होती है, भांग जो पीने वाले होते हैं वो भांग भी पीते हैं या तो ठंडा ही होती है। देन काफ़ी पकोड़े वगैरह सब होते हैं, फ्रूट्स होता है, फुल मतलब पूरा दिन हम लोग है ना सेलिब्रेट करते हैं, उसको खा पी के एंजॉय करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एवरीबडी वांटेड टू सेलिब्रेट ड्यूरिंग दैट टाइम, बट कर नहीं पा रहे थे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। घर में जितना हो सके वो तो एक दूसरे को कलर लगा के हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे, जैसे सब लोग पूरी दुनिया ने किया हुआ है। हम लोग ने नहीं स्पेशली, लेकिन पूरी दुनिया ने किया हुआ है। सो अभी चांस मिला है कि हम लोग घर के बाहर निकल सकते हैं। कम्युनिटी एक साथ जुड़ती है। हम अगर 10 जन को मिलते हैं उसमें से 2 हमारे दोस्त भी बनते हैं, चाहे वो बाकी के 8 ना बने हो, वो फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इट्स सारी कम्युनिटी साथ में आती है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। होली या ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसी इवेंट्स सारी कम्युनिटीज को इकट्ठा करती है। जिसके साथ अगर किसी के साथ पूरे साल के दौरान अगर जैसे आपकी अनबन हो गई है तो डेफिनेटली आप उनको उसमें इनवाइट करें, उनके साथ जो भी गिला शिकवा है वो दूर करते हैं और उनके साथ आप नई शुरुआत करते हैं। जैसे हर कलर एक मैसेज देता है, राइट, वैसे ही होली है एक अच्छा मैसेज देती है कि सब घुल मिल के रहो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बना के रहो और जितना हो सके इतना प्यार बांटो एक दूसरे में। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ BA.2 ਉਪਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। The BA.2 sublineage of the Omicron variant is increasing in Canada, but at a slow rate, while other sublineages are declining or stable. The growth rate of BA.2 internationally appears to be highest where there is a combination of low booster coverage and where BA.1 has not already driven high infection rates. While evidence suggests BA.2 is more transmissible than BA.1, BA.2 does not appear to be associated with more severe illness in vaccinated populations. However, it is still capable of causing severe disease among people without prior immunity,
which underscores the importance of getting up to date with COVID-19 vaccines, including a booster if you're eligible. Over the past 2 years, Canadians have shown tremendous capacity to adapt to change and uncertainty as the pandemic has evolved. While COVID-19 is here to stay, we are now entering a period with more opportunities for in-person activities, gatherings, or travel. Some of us may be feeling a greater sense of comfort, while others may feel less at ease. Many people in Canada may be taking into consideration factors such as COVID-19 vaccination status, the level of COVID-19 activity locally, underlying medical conditions, and risk to personal contacts to make informed decisions. This includes choosing activities that are best for their individual and family situation and using personal protections. For example, to continue wearing a well-constructed, well-fitting mask as an important added layer of protection, even if not required by local authorities. We know that these proven practices, along with strong protection afforded by being up to date with your COVID-19 vaccines, have reduced the impact and severity of the pandemic. I encourage Canadians to show each other compassion and respect as we make decisions to protect ourselves, our families, and our communities, especially those at highest risk. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਨਿਸ ਸਟੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਲਾਨੀ ਵੁਡੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Today, the fight for democracy is in Ukraine, but the threat extends around the world. The people of Ukraine, a sovereign country, are fighting for their lives, defending their freedom, their right to choose a better future for their children. We see their strength and courage in face of tyranny. I witnessed their resolve in Poland and Romania, on flights across Europe, in train stations, and even in Red Cross facilities. This war is the choice of one country, the Russian Federation, its government and leadership, and in particular, the decision of President Vladimir Putin. Russia's invasion of Ukraine, the greatest threat to world peace since World War II, is part of a coldly calculated and carefully planned sequence of events by the Kremlin. For several months, we have been saying that Russia was positioning troops and equipment to invade Ukraine. Russia claimed that it was not the case and that there was nothing to worry about. Russia lied. President Putin moved those troops over the border and invaded his sovereign neighbor with reckless abandon for human life. He thought he had the military might to take Ukraine within days. It's now been 23 days, and this invasion will fail. Canada is doing everything we can to advance diplomatic solutions and provide critical support to Ukraine. Canada has sanctioned over 1,000 Russian and Belarusian individuals and entities. We cut Russian banks off from the international SWIFT banking system. We ban crude oil imports. We ban Russian and Belarusian planes from our skies, Russian boats from our ports. We have delivered lethal and non-lethal aid. We have donated nearly $200 million to humanitarian efforts, and we are ready to welcome an unlimited number of Ukrainians fleeing the war to Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। The Ukrainians need not just medical and humanitarian help. They also need emotional. They also need psychological support, because they feel like they're alone. As Ukrainian fighters stall the Russian invasion of their homeland, Canadians are stepping up to provide medical supplies to the besieged Ukrainian health system. From the first day we know the war is starting, we start to do something. We are collecting supplies and medication from hospitals, clinics,
pharmacies across Ontario to be delivered to Ukraine. We have some requests from the hospitals from Ukraine. We work directly to the Ukraine Ministry of Health, and we have some list of medication depends of the hospital. For example, child sick hospital needs something. Some hospital needs insulin. Some hospital needs whatever the hospital needs. We have some list of medication. We send this on to the hospital in Canada, to the pharmaceutical company in Canada. They help us to collect this one. We send directly. Every morning I woke up and I just look at my phone and I see my sister alive, my mother okay. And this is very, very difficult. That's why this support we do, not just association like we do medical and humanitarian, we also help people to feel they are not alone, they are not lonely. We are here, and especially thank you to Canada. God bless Canada. ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨ ਨਾਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। NTSB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਗੋਲਫ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਨ। 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। It's very shocking to see something like that happen. You don't know what to do, and especially being so far away from home, we're almost just stuck waiting for news, and it's really hard for all of us here. This was a head-on crash. A 13-year-old child was behind the wheel of the pickup truck. It appears at this point in the investigation that the left front tire, which was a spare tire, had failed, which resulted in the vehicle pulling hard to the left and crossing into the opposing lane. He was here what seemed to be 24/7 and really was working towards an ultimate goal of playing golf at the university level and also maybe even professionally. One of the students is eating chicken soup, and they are recovering every day. It's a game of inches. I know Hayden's a fighter. I know he's going to get through this, and he has tens of thousands of people behind him rooting for him as well. When one of us is hurting, all of us are hurting.